लर्निंग इज कि डीमार्ट में आफ्टरनून में कौन जाता है? तुम्हारी मम्मियाँ। तो उस वक्त कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट यू विल कम टू द आइल एंड देन यू विल लुक कि कोई देख नहीं रहा है क्या, और मैं उन्हें देखता हुआ दिखता हूँ, राइट? ऑल हैड दैट हेजिटेशन कि क्या पूछ रहा है, राइट? सबको था ना कि क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, ये सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, राइट? So this is what Raymond wanted me to understand. This was the pain point. So hello everyone, my name is Mayank Vishwakarma. I was interning with Raymond Consumer Care Limited under the brand Kama Sutra, and my project was an observational based market research study, under which what I have to do was I have to understand how consumers buy condoms and why they buy it, right? Like from the modern trade. So do you guys know what modern trade is? Anyone? Modern trade. Modern trade क्या हो सकता है, सोचो? Anyone? Marketing students? So see, guys, modern trade basically means the D-marts, the Reliance Mart, or the hypermarts, or Wellness Forever, right? So I had to observe. I used to stand 2 to 3 hours over there as a ghost customer, standing over there observing people how they are buying it, like whether they are hiding it in their basket or they are openly carrying it through the store, right? So this was the major challenge. You have to stand in front of the aisle and keep on observing the people who are there, right? And once if you are going there and you are going to buy a condom, right? You first will come to the aisle and then you look कि कोई देख नहीं रहा है क्या, और मैं उन्हें देखता हुआ दिखता हूँ, right? That's the major problem. And so guys. So the second problem that I found out was, any guesses the best time that you can find customers in modern trade, like buying condoms? What was the best time slot जहाँ वो लोग खरीद रहे हैं? Afternoon. Morning. Time slot बताओ. So guys, listen. Guys, relax. So आफ्टरनून में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज डीमार्ट में द बेसिक लर्निंग इज कि डीमार्ट में आफ्टरनून में कौन जाता है? तुम्हारी मम्मियाँ। तो उस वक्त कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ वो लोग देख सकते हैं, राइट? सो द बेस्ट टाइम इज फ्रॉम इवनिंग 8 to 11. So I have to be there from 8 to 11 in the DMart or the Reliance Mart, observing people how they buy it. And the major learning that I got through this internship, the whole journey, that was you need to be patient, right? For the first 2 weeks, I only got 4 customers for the first 2 weeks. और मैंने जाके मेरे मैनेजर को बोला कि 4 ही लोग मिले हैं, and he's like कि मैं एक दिन में 4 लोग ढूंढ सकता हूँ, right? So that time 2 चीज हो सकती है, you will get demotivated, right? Or else you need to understand उसने क्या देखा या क्या टाइम पे देखा. You need to understand कि what are the other possibilities, मैं कैसे लोगों को ढूंढ सकता हूँ, right? तो वो व्यू अपना विजन वाइडर करो. तो मैंने फिर सोचा कि let's change the time, right? So 8 to 11 में first day Sunday, right? I got around 8 to 9 customers एक दिन में, Sunday को. So Sunday has the highest session for Sunday. कभी जाओगे तो देख लेना, right? Now talking about the major learnings and suggestions that I would like to give is, I also got a chance to work on the e-com platform that is Tira. Anyone is aware what Tira is? Tira, yeah. It's a new segment by Reliance. It's a new segment by Reliance Industries. Like how Nykaa is like a leading brand in Indian beauty, so is Tira Beauty coming on. So Tira is a e-com beauty platform where you'll find all the luxury and like from A to Z, all the beauty products from Louis Vuitton to Raymond to Park Avenue to KX, right? So I got a chance over there to work on their product listing and product cataloging.
सो वहां पे मेरे मैनेजर ने मुझे बोल दिया कि गाइस मैं एक्सेल में वीलुकअप लगा के ये प्रोडक्ट सॉर्ट करके दो, एंड इट वाज अराउंड 1000 एंट्रीज. मुझे आता था बट उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तुरंत मिला था. मैं आ और कर दे. सो दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो तुम लोग सीख रहे हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई इट, राइट. अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखो. एक्सेल सीख रहे हो, यू नीड टू नो कैसे अप्लाई करते हैं. जब तक प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे एक्सेल के थ्रू तब तक नहीं पता चलेगा. वहां जाके सोचोगे यार वैसे सीखा था बट ऐसे कैसे, राइट. दैट्स द मेजर प्रॉब्लम दैट यू विल फेस in corporate. And one more important learning or suggestion that I would like to give: you should be good at your communication with your manager and your team members. So I was I had in my team there was Pavitra, Jeel and Shubham Gandhi. So they were also helping me कि मैं ये कर सकता है. These are the suggestions that you can work on it. And even Jeel helped me कि Excel ऐसे यूज कर सकते हैं, right? So you need to know how to communicate with them, and you need to be a game player and a team worker, right? That's all. Thank you so much.